है दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज हम फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मनोज राउत आपको इस कंसेप्ट के बारे में समझाऊंगा इस वीडियो। सो आइए समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। सो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स और 4PL is a supply chain management model where a company outsources its entire logistics operations to a single external provider. सो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का कंसेप्ट यही है कि ये एक सप्लाई चेन मॉडल है और काफ़ी सारे कंपनीज बेसिकली गो फॉर आउटसोर्स सिंगल कंपनीज एंड दिस सिंगल कंपनी मतलब कंपनी को लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 2, द फोर्थ पार्टी प्रोवाइडर्स वर्क क्लोजली विद द क्लाइंट लाइक कंपनी, understand their business needs and coordinate the management of various third party logistic provider to ensure smooth operation and collaborations at the every steps. So fourth party logistics कंपनी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट होकर काम करता है, जो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, कंपनी को कोऑर्डिनेट करते हैं, खास करके assigning or allocating various amount of third party companies, and they basically provide smooth operations so that company can only focus upon the core business and they must go for collaboration at every step of the company's own business. तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असाइन ए फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनीज, जिसका मतलब आउटरीच थ्रू आउट द ग्लोब होना चाहिए। द नेक्स्ट दे कैन असाइन थर्ड पार्टी फैसिलिटीज एंड थर्ड पार्टी फैसिलिटीज अगर आप यहाँ पे देखोगे दे विल प्रोवाइड द वेयर हाउस and as well as they are also providing the FTL and LTL freights. So they basically provide the transportation facilities, and FTL stands for full truckload and less than truckload freight. The next important part is, so both party logistic can also provide packaging solution to the companies. They are also provide the function like courier services from the company warehouse to the number of destinations. So यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चर इज बेसिकली हैंड ओवर द एंटायर एक्टिविटीज ऑफ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मॉडल, स्पेशली रेफरेंस टू फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, एंड दे विल गो फॉर लॉजिस्टिक्स कंपनीज एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी प्रोवाइड पैकेजिंग सॉल्यूशंस, दे गो फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, दे आर ऑल्सो एनेबल द ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्टेशन, एंड फाइनली इट शुड बी रीच टू द रिकॉग्नाइज्ड मार्केट्स। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे फोर्थ पार्टी का जो मेजर फंक्शन है लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग्स, वेयर हाउस फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस फोर कोऑर्डिनेट फाइनली द मैन्युफैक्चर कैन एनेबल देयर प्रोडक्ट टू द मार्केट्स। सो यही बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट समझेंगे इस वीडियो में व्हाट आर द रीजन बिहाइंड बस दैट इज नोन एज फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, which is basically assigned by a company. The first important part है reduce logistics cost. So ये अगर कोई कंपनी फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स को असाइन करता है, they can easily reduce the transportation or logistics cost. The next is liberate resources to manage. So there is a huge amount of known as independent to manage the resources like man, machine, materials. Then adapting to the scales. Then knowledge management. Most of the cases the third party logistics will provide large amount of that known as informations, resource information, material information, transportation informations, new innovative packaging innovations. These are the knowledges very much helpful for the companies. The next is depending upon the company policies. That is why they have mentioned the other regions. It is depend upon the company's own policies. The next is improve process qualities, especially as a reference to the supply chain management model. Then reduce asset and increase its flexibility, especially refers to faster delivery from the company to the market. And the next is, if a company is assigned a third party logistics, they must only focus upon their core business. कंपनी अपने core business को फोकस करने के लिए जो लॉजिस्टिक ऑपरेशंस है, जैसे मतलब आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, पैकेजिंग सॉल्यूशन, these are very hectic in the current scenario. That is why company are basically assigned fourth party logistics. सो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे एथिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया एंड इंटीग्रेटेड E2SCM is a large or famous companies, those who basically provide the fourth parties logistics services to many companies, especially reference to India.
नेक्स्ट देखेंगे द कॉमन डिफरेंस बिटवीन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वर्सेस फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इन केस ऑफ थर्ड पार्टी फोकस इन ऑर्डर फुलफिलमेंट, बट फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, मैनेज एंटायर सप्लाई चेन। द नेक्स्ट इज ओन and or lease warehouse space, but in case of fourth party logistics does not own assets. The next is fourth party logistics. Point number 3, merchant able to directly communicate with the third party, but here merchant communicate with the third party via the fourth party logistics. Point number 4, merchant build relationship with the third party, but fourth party logistics manage relationship with the merchant's third party logistics. Best for the rapidly growing SBM brands and best for the enterprise brands. Then some third party may not have technology, but as I told in the previous slide, that they basically focus upon knowledge management. So they provide the technology like warehouse management system or interior management systems. So वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।